Hey, what's up guys? Welcome to my channel and I am back with a new video. So, HMD Global had introduced quite a few Android powered Nokia branded devices thus far. And the Nokia 7.1 Plus is expected to be the most powerful budget smartphone of them. Nokia budget series में काफी सारे devices देखने को मिलता है like Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1 Plus and the next phone in the series will be Nokia 7.1 Plus. Now, we already have some information that has been leaked on Chinese social site Weibo. आप अगर इस rendered image को देखेंगे तो Nokia 7.1 Plus डिजाइन वाइज ऑलमोस्ट सेम है Nokia 6.1 Plus की डिजाइन से। आप इसकी डिस्प्ले के ऊपर एक नॉच देख पाएंगे और इसके नीचे एक थिन बेजल देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंक्लूड ए 6.1 इंच फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले at 1080 into 2280 pixel resolution with 19.5:9 aspect ratio, and it is almost confirmed that the Nokia 7.1 Plus will have a dual rear camera setup. First one is a standard 16 megapixel camera lens and second one could be a monochrome lens to get better low light shots. रिपोर्ट के हिसाब से Nokia 7.1 Plus में कार्ल जाइस ऑप्टिकल लेंस यूज करेगा जो Nokia प्रीवियस विंडोज स्मार्टफोन में यूज किया गया था। Looking back at past Windows Phone releases, Nokia camera were always something impressive, yet to be seen if they can recreate the camera technology that Nokia and Zeiss mastered in Windows phones. Nokia 7.1 Plus will be a tall, slim phone with thin bezel, और ये डिवाइस एक अच्छा कंपटीटर होगा बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन में। Oppo रिसेंटली एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है Oppo K1 के नाम से और ये डिवाइस एक बजट डिवाइस है। बट इसमें देखने को मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर सेंसर जो Nokia 7.1 Plus में आने की रूमर्ड है। बट Nokia 7.1 Plus इज ऑल्सो ए बजट कैटेगरी स्मार्टफोन एंड आई एम नॉट श्योर कि Nokia 7.1 Plus में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा या फिर नहीं, बिकॉज Nokia हैज नॉट येट एडेड द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर टू एनी फोन। लेकिन कुछ दिन पहले Nokia CEO राजीव सूरी अनाउंसमेंट किया था कि Nokia बजट एंड मीडियम कैटेगरी की स्मार्टफोन में कुछ प्रीमियम फीचर इंक्लूड करेगा, तो शायद Nokia 7.1 Plus में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को इम्प्लीमेंट कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यू रिपोर्ट Nokia 7.1 Plus will have a Qualcomm Snapdragon 710 octa-core chipset with 4GB RAM, 64GB स्टोरेज एंड अनदर मॉडल जो आएगा 6GB RAM with 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। और आप अगर बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस एंड एग्जैक्ट लॉन्च डेट के बारे में तो Nokia 7.1 Plus 16,000 to 19,000 के बीच में देखने को मिलेगा और Nokia 7.1 Plus को चाइना में 28 अक्टूबर को लॉन्च होने के बारे में रूमर्ड है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज़ आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज़ सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस आउट।